एटा दिया जोनी. So let's start today's discussion of wave optics assignment. Wave optics important questions. Question number 1. Which phenomena establish wave nature of light? Photoelectric. Photoelectric effect, one phenomenon. Then Interference. interference. Then Diffraction. Polarization. polarization. Interference, diffraction, and polarization. So these three establish the wave nature of light. Okay, these three establish the wave nature of light. Understood? Yes. Can two identical balls behave as coherent sources? No, sir. No, sir. Why? No, sir. The two independent lights. So they are independent. They are independent. Two independent sources cannot be coherent. Question number 3. What is the phase difference between two particles in same wavefront? Zero. 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 Because wavefront definition is say. Question number 4. What is the angle between wavefront and direction of propagation of light? 90 degree. 90 degrees. Question number 5. What is the shape of wavefront for point source? What shape of wavefront? Concentric circle. Concentric spheres. Concentric spheres. Line source ra? Coaxial cylinder. Cylindrical. Coaxial cylinders. Sources are infinite. Parallel planes. Parallel planes. Okay. Good. Then what is the phase difference between 2 points on the same wavefront in two wavefronts separated by linear distance lambda? Tell me the answer. 2 pi. 2 pi. Define angular fringe width in interference. Okay. So this one I think I have not told you. Angular fringe width we have not discussed earlier. No? तो क्लास रे थ्योरी क्लास रे एंगुलर फ्रिंज विड्थ हम कहया को भूली जाईथि बट एबे हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिस्कशन कर दबा देखो समस्त भलो रे व्हाट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ नाउ लेट्स सी डेटा एटा स्क्रीन टा ओके एटा फ्रिंज अछि ओके डेटा सोर्स एटा S1 सोर्स एटा S2 सोर्स तो linear fringe width already have done ना हमको angular fringe width दरकार so how can you find angular fringe width? Angular fringe width if you want to write then you write down angular fringe width. It is the angle made by the fringe at the midpoint of two sources. It is the angle made by the fringe at the midpoint of two sources. Okay, see, this is the angle. This is called as angular fringe width theta, and this is the linear fringe width beta. This one you know, linear fringe width beta, but this distance from this midpoint to the fringe that is equal to capital D, right? So it is the angle made by the fringe. Angle made by the fringe at the center of or at the midpoint of two slits. Got it? yes, sir. Then theta is equal to अच्छा D बुझ पालो तो हम आगु ऑलरेडी नेग्लेक्ट करी छे भलिया D करी सो थीटा इज इक्वल टू ताले कोन आसबो एटा गोटे सेक्टर भलिया जस्ट बिहेव कला गोटे जो सर्कल रो सेक्टर माने पडुथो टिके ज्योमेट्री थीटा इज इक्वल टू कोन आसबो
Tell me, beta by D. d. Theta is equal to L by R ना, so theta beta by d. तो beta हला lambda d by d by d. तो d कटि गले तो theta केते आसला Lambda by D. lambda by d. This is the angular fringe width expression. गोटे बहुत इंपोर्टेंट लाइन गोटे अछि. कौन इंपोर्टेंट लाइन एठी? Angular fringe width is independent of a capital D. ताको बेस करके सार माने एग्जाम रे क्वेश्चन पके देबे. सार मान कोन करंती ना कैपिटल D या थिला या हे गला कमी गला बॉडी गला angular fringe width कोन हबो. But if you understood, then you will just write it is independent, no change in angular fringe width. So linear fringe width depends on capital D, but angular fringe width is independent of capital D. Okay, write down that important line also. Angular fringe width is independent of capital D. Got it? Yes. Okay. Then move to the next question. Question number angular fringe width in interference. Question number 8. What is the relationship between path difference and phase difference? Tell me quick. So 2 pi is equal to lambda. Equal to lambda. But you have to write it like this. When path difference is lambda, phase difference is 2 pi. Or when phase difference is 2 pi, path difference is equal to lambda. You have to write it like this. Okay, don't write it 2 pi is equal to lambda. Question number 9. Please somebody read question number 9. How does the fringe width of interference change when the apparatus of Young's experiment is kept in a liquid of refractive index 1.3? 1.3. Right. The whole Young's apparatus will be dipped in a liquid. With refractive index is 1.3. Clearly, refractive index is water in Buddha. Okay. So what change will happen in the fringe width? What answer? So Tell me. It decreases. Why decreases? Sir, u mu is equal to a plus b by lambda square formula ru pakeki mu increases so lambda decreases. The lambda decreases hele width ra formula y equals to lambda d capital D by small d re decrease habo. Okay, good. So refractive index apparatus ta air re thila. जदि से ताको वाटर भितरे बुडेबा बा जेकोस लिक्विड भितरे बुडेबा देन refractive index is increasing. Refractive index रे increase करिवो then lambda कोन हबो decrease करिवो. How much it decrease? The relation is lambda dash is equal to lambda by mu. Mu times decrease करिवो. तमे निजे refractive index रो फॉर्मूला पक्की कि तमे जानि परिवो. जदि एटा केमती हला जानि पारुना तले म तुमको कहि दोछि. तमे एई फॉर्मूलाटा आगु पढिथिला माने अछि 1 mu 2 is equal to lambda 1 by lambda 2 refraction पढिथिला. So this is mu 2 by mu 1 lambda 1 by lambda 2, right? Mu 2 माने mu हमर लिक्विड रे mu 1 तो 1 because air रो और lambda 1 माने air, so that is lambda, but lambda 2 माने lambda dash, that is liquid रो. So lambda dash is equal to lambda by mu. Got it? Any problem? So wavelength 1 by mu times hejibo. Okay. So wavelength 1 by mu times hejibo. तालो what happens to the fringe width? को fringe width कहता है beta dash. Beta आगुर कहते थिला lambda d by d. Lambda d. एबे beta dash कहते हेजिबो Beta by mu. lambda dash d by d. But lambda dash टा होची lambda by mu. D by d. So this is beta by mu. So fringe width रे exactly 1 by mu times ही हेजिबो. एटा हमर beta ना. Beta dash is equal to beta by mu. So fringe width becomes 1 by mu times. Got it? Any doubt? एटा तम अंडरस्टैंडिंग में मु करेली. तमे खाली एटा को लिखि की प्रोसीड करिवो बस. This one I just did for your understanding. केमती lambda dash to lambda by mu होला बुझिया पे मु करेली.
Okay. Yes, Next sir. question. Question number 10. Please read question number 10. Discuss the effect of moving the source slit closer to the double slits on the interference fringes. Fringes. Source slit moves closer to the double slit. So what you are understanding here? Double slit, you know, S1 and S2. But a source slit is what? What is this source slit? No. That is one important point again. What is actually this source slit? Double slit, okay, we understood. But source slit? आमे से सोर्स स्लिट को जेतेबेले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करिथिले एते इंपोर्टेंस दे नथिले बर तार इंपोर्टेंस बहुत बेसी सोर्स स्लिट रो ओके देखो सोर्स स्लिट कोटा तमन के मने पड़ जिवो सोर्स स्लिट कथा तमे एमती करथिला दीटा स्लिट गोटे S1 करथिला गोटे S2 करथिला एपट गोटे स्क्रीन देथिला एमती हला तमे एई पट को डील करिके बहुत किछ करथिला बट एपट साइड रे आ गोटे सोर्स टे फिगर करा हेतिला बट आकु तमे एते इंपोर्टेंस देना तमे काहे कि सेतबेले एते इंपोर्टेंस देना कि मते कहबा आमे ताको काहे कि सेतबेले एते इंपोर्टेंस देने नेग्लेक्ट करछे पॉइंट Why? सोर्स नहीं लेथिला नो सर कोहेरेंट दरकार थी कोहेरेंट तो हेछि आमे काहे कि ताको एते इंपोर्टेंस सेतबेले देने बट वर्तमान आमे ताको इंपोर्टेंस दोछे मु जो फिगर ड्रॉ करिछि मते को एक्चुअली जो लाइट जाई कि पहुंची पी रे एक्चुअली लाइट स्टार्ट हेछि कोठू सोर्स स्लिट ना डबल स्लिट रू सोर्स स्लिट रू देई कि से भाया डबल स्लिट देई कि तापर से जाईछि सोर्स स्लिट मु स्मॉल एस लिखली ओके स्मॉल एस रू से S1 देई कि पी को जाईछि तम त डिस्टेंस कवर्ड एक्चुअली एस S1 प्लस S1 पी फिर S2 भाया जीवो तले S2 प्लस S2 पी बट तमे एते सब कथा जदि सत कथा तमे किंतु पाथ डिफरेंस लिखला खाली लिखि देछ S2p S1p तमे पछरा को कंसीडर करछ कि नो सर No, काहे sir. करना बिकॉज़ मु ताको सिमेट्रिक रखिथिली आ S1 जति की S2 भी सेति सेति पे से कैंसिल हे जाउतला बाय डिफॉल्ट से कैंसिल हे जाउतला सेति पे हमो किछ फरक पडो नथिला किंतु आमे ताकू जदि मुठे सोर्स स्लिट को टिके तळ ऊपर कर देबी त देन इट विल प्ले ए वाइटल रोल मुझे तो टिके तळ ऊपर कर देबी देन इट विल प्ले ए वाइटल रोल अंडरस्टूड और नॉट सोर्स स्लिट रे इंपोर्टेंस समस्त बुझ परला कोन कहली ना नहीं Yes. Yes, sir. ओके सो दिस इज द सोर्स स्लिट ताको जे टिके तमे एपट सपोर्ट कर दबो ताले तो बतन से बतन वाइटल रोल प्ले करिवो बट करू नथिला काहे कि S1 S2 थिला कैंसिल हे जाउतला सेट पे त माने ताको इंपोर्टेंस दे नथिलो आउरी भी तार विड्थ टा भी इंपोर्टेंट ताकू केते डिस्टेंस रे रखिबो डबल स्लिट प्लेन रो सेटा भी इंपोर्टेंट ए सबुडा होच इंपोर्टेंट ओके जदियो डायरेक्ट थ्योरी रे नाही ए विषय रे किंतु बुक रे क्वेश्चन अछि एग्जांपल रे हला एडा बुक एग्जांपल क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग ओके तो कोन हबो ताले कंडीशन डू यू नो वन कंडीशन ए बैक रे गोटे कंडीशन अछि यदि सेही कंडीशन सैटिस्फाई न करिवो तुम जेते एपटे कंडीशन सैटिस्फाई करछ कर बिल्कुल इंटरफेरेंस पैटर्न आसीबनी तल से कंडीशन ता कोन ना s by s less than equal to lambda by d where small s is equal to width of the source slit where small s is equal to width of the source slit and capital S is equal to distance of a source slit from the double slit plane. Understood? Yes, sir. लिख दियो समझते लिख दियो the condition for interference is s by s less than equal to lambda by d where small s is
width of a source slit and capital S is equal to distance of a source slit from the double slit plane. Capital yes. The smallest कौन कहले? Width of a source slit. Capital S कौन कहले? Distance between source slit and The double slit. double slit plane. A condition satisfy न कले interference होबनी. लिखले the condition of interference is this, where small h is this and capital S is this. Lambda and d से मना जोन बोलला क्लिक कर दरकार. But आम क्वेश्चन कौन दिला? When source slit moves closer to double slit plane. जितने ये closer पड़े ऐसे double slit plane को what happens to capital S? Decreases. Decreases. लगा. When source slit moves closer to double slit plane, capital S decreases. When source slit moves closer to double slit plane, capital S decreases. So small s by s increases. Small s by s कहाँ होगा? Increases. Increases. Small s by s यदि increase करेगा, देखले बतानी condition टा. Is the condition more satisfied or is going to be violated? Violated. Going to be violated. तो ये वाला situation में कौन होगा? Interference pattern becomes less and less sharp. लिख दिया. So interference pattern becomes less and less sharp. So interference pattern becomes less and less sharp. So what do you wrote? Interference pattern becomes less and less sharp, right? Interference pattern becomes less and less sharp. But when the condition violate, no interference pattern is observed. No doubt. When the given condition violate, no interference pattern is observed. Okay. When the given condition violate, given condition means this condition. इसलिए small s टा कमी जीवो, LHS टा कहाँ होगा? बहुत अधिक हो गया माने less than the उल्टी जीवो, उल्टी की माने करो greater than गया, तल the condition violates. Understood? Yes, sir. Yes. Okay. What you wrote, please read. So if the source slits become closer to S, capital S First, you have to decreases. write the condition. The condition for interference is S by S less than equal to lambda by d, where small s is width of the source slit, capital S is equal to distance of source slit from the double slit plane. When source slit moves closer, capital S decreases, so small s by capital S increases. Hence, interference pattern becomes less and less sharp. But when the above condition violate, no clear fringe pattern is observed. Full to full mark you will get. Over. Any doubt? Yeah. Next question. Question number 11. What will happen to the interference fringe pattern if the width of a source slit is increased? Is it different or same? So different. Small s is increasing. Width of a source slit is increased. Width of a source slit means small s. Small s increase. The smallest increase करी same condition also happens. Only change it के लिए क्या होगा? Small s increase. Small s increase कले s by s भी increase करीबा. Everything is same.
everything is same. Okay, so now same condition of interference is this when the width of the source slit is increases, small s increases, so small s by capital S increases, so interference pattern becomes less and less sharp. And again, when the wave condition violate, no clear fringe pattern is observed. Same writing, same. Move to the next question. Short answer questions now. Let's discuss. It's a very good question. Okay. I think this question is from diffraction. Okay, all of you see. Tell the answer of this. Quick. First minimum is adjacent to central maximum. That everybody know in single slit diffraction. That you know. What is the phase difference between the Huygens wavelet from the edge of the slit and the wavelet from the midpoint of the slit? Who can tell me the answer? So pi by 2. Next. Pi. Next. So pi. Question ta bujhiyela ki nahi mate first ko. Diffraction of question ta. Ko. Width of the coach आम diffraction टिके मन पका तम माने एटा थिला एमते aperture टा एटा screen टा थिला central maxima रो side को minima आस्तला एटा A point थिला एटा B point थिला मझिरा में E point देथिले theory पढला बेले जेटा minima हबो A point रु जो light जीवो E point रु जो light जीवो तांको भीतर path difference केते बा दरकार pi by 2. So pi by 2. path difference Lambda by 2. lambda by 2 lambda by 2 हेले से माने destructively interfere करेबे destructively interfere करेले से मानकर minima formation हबो P point कहितल तुमको let's divide the slit into two parts dita का part भीतर part difference lambda by 2 टिके मन पकाओ हला let's divide the slit into two parts कहितली forcefully you have to remember okay so part difference lambda by 2 ता माने edge of the slit और midpoint of the slit मझरे part difference lambda by 2 जदि path difference का lambda by 2 हला तले phase difference केते Pi. हमको आगुर बहुत थोड़ा कही चले लैम्बडा जगह 2 पाई पके दबो देन काम खत्म पाई so the answer Pi. okay no doubt okay let's move to the next question question number 2 question number 2 okay so question number 2 please read question number 2 yes If the two slits in Young's experiment have width ratio 1:4, deduce the ratio of intensity at maxima and minima in the interface pattern. pattern so who has done this question anybody who has done okay very good okay let me tell about this question actually question कौन है देखो ये जो क्वेश्चन करबा पय जो फार्मूला दरकार से फार्मूला विषय किछि भी इंफॉर्मेशन थ्योरी रे नाही चैप्टर भितरे सीटा पिला मान को पय प्रॉब्लम हे जाय ओके क्वेश्चन कला बेले जो दरकार पड़े हमर फार्मूला कौन फार्मूला मो तुम फार्मूला देखो लिखि दोछि ऑलरेडी फार्मूला भी फार्मूला कॉपी रे तुम मान कर थिबो फार्मूला पार्ट रे अछि असाइनमेंट रो I1 by I2 is equal to A by B Yes. is equal to W1 by W2 जे लिखी ना तुम्हें फार्मूला को सॉरी एटा A square by B square जे लिखी ना फार्मूला को लिखि पका समझते बिकॉज़ एटा तमन पे बतने बे दरकार पड़िबो दीटा क्वेश्चन एमते अछि
जोटा ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम रे आसी सारी छी जदियो तार किछि इन्फॉर्मेशन बुक रे नाही बट बोर्ड एग्जाम रे पळे आसी बोर्ड जनकर मिसकनसेप्शन काले बोर्ड एग्जाम रे आसीबनी बट देखिबारे बोर्ड एग्जाम रे भी क्वेश्चन पळे आसला I1 by I2 is equal to A square by B square is equal to double n by double 2 double n by double 2 कोन Amplitude ना A B होचने एम्पलीट्यूड आउ Yes. double n double 2 होचंती width of the slits double n double 2 होचंती width of the slit width माने ए पार्टटा एटा double n आउ ए पार्टटा कोन double 2 double n double 2 होचंती width of the slit A B होचंती amplitude of a wave I1 I2 होची intensity of individual wave ए फॉर्मूला को मन रखो आउ गोटे फॉर्मूला में हमर दरकार पड़िबो I max by I min सेटे मु आटे टाइम तुम कहि दोची I max टा k whole into a plus b रो whole square I min टा k whole into a minus b रो whole square k कटि गले a plus b by a minus b रो whole square એટલે a by b plus 1 by a by b minus 1 रो whole square मु सबुतरे b टा को डिवाइड कर देली सो दिस द आंसर फॉर्मूला समस्तंकर मन रहला जहा मु कहली फॉर्मूला गुडा सब न्यूमेरिकल करिया पे वर्तमान दरकार पड़िबो ओके Yes, sir. ओके सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस अब हम कर परिया क्वेश्चन देखो देखो क्वेश्चन में कौन थिला से कौन देइथिले एटी टू स्लिट विड्थ रेशियो देछि विड्थ रेशियो मींस कौन गिवन अछि as per our formula I by W. w1 by w2 केते देछि 1 is 2 by 2. w1 by w2 देछि 1:4 तले I max by I min केते हबो ना कौन पचाची हां मैक्सिमम टू मिनिमम रेशियो से पचाची w1 by w2 दे देछि 1:4 कौन कला w1 by w2 दे देछि हम जे सेथु a by b बाहर कर दो आणि के पुट कर दबा हला वेरी सिंपल हला a by b is equal to w1 by w2 रा रूट ओवर ओके मो इदिरा फॉर्मूला रन लेरी तले a by b केते पळे आसला 1 by 2. 1 by 1 by 2 plus 1 minus by 2 ताको आणि के पुट कर दियो 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 minus 1 the whole square then you got the answer सर एठी जेतेले हमें रूट करछु प्लस माइनस 2 ने दीटा केस करबनी खाली प्लस दरकार नहीं दरकार width रे प्लस माइनस रा मीनिंग कोन यस width minus 2 width plus 2 माने कोन इधर नी मीनिंग कुछ मीनिंग नहीं तर तो व्हाट आंसर यू गॉट जो मैंने करिना कर देला समस्त 9:1 जो मैंने करिना समस्त कर देला यस यस okay answer is coming 9:1 that's the correct answer given here question number 3 also similar width of two slits are the ratio 4:1 width is 4:1 what is the ratio of amplitudes width is 4:1 तला amplitude ratio केता हो intensity ratio केता हो 2:1 सही सेम जंसरा एडा amplitude ratio पचाची सेटा 1:4 देथिला एडा 4:1 देथि 4:1 देला आंसर केता हो 2:1 खाली एडा 4/1 हो 2:1 और intensity ratio केता हो 4:1 4:1 डायरेक्ट I1 by I2 is equal to W1 by W2 तो सेटा 4:1 हो intensity ratio right okay next question कौन अछि does conservation of energy hold good in interference of light does conservation of energy hold good in interference of light what is your conclusion yes sir खाली yes लिखले हबनी एक्सप्लेन करे पड़े छै 2 मार्क्स क्वेश्चन खाली yes लिख दे तुमको 2 मार्क्स दे देबनी मागणा टे you have to explain को केमते एक्सप्लेन करिया जणा तो पडुची नै कि कोन जणा पडुची जदी आई लाइट आसिला स्क्रीन ऊपर केते लाइट पडियो बोली मु तुमको कहउतली जतले तमे कॉमन मैन थिलो सब जगह रे केते लाइट पडियो बोली कहउतली 2i सब जगह 2i पडियो बोली मैं कहउतले किंतु जदी इंटरफेरेंस हला
ताले केतला के पड़ला 4i 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 आउ 0 4i आउ 0 ओके 4i आउ 0 पड़ला ले समान लानी एठी टोटल इंटेंसिटी केते 4 एठी केते 4i एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड्स गुड एग्जाम रे तुम केमते लिखिबो दैट्स इंपोर्टेंट एग्जाम रे केमते लिखले मार्क मिलबो बेले बेले आंसर जणा थाए सब जणा पडुची पूरा विजिबल सब क्लियर कट बट एग्जाम रे कोन लिखिबो पिला माने जानि परंती जोथि पे मार्क कटि जाय देखो तुम एमते लिखिबो एग्जाम रे नो इंटरफेरेंस नो इंटरफेरेंस I1 हला k a स्क्वायर I2 हला k b स्क्वायर ताले जदी नो इंटरफेरेंस हला ताले I1 प्लस I2 जदी असला k होल इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एनी डाउट विथ नेट इंटेंसिटी हला तापरे विथ इंटरफेरेंस जदी इंटरफेरेंस होबो ताले I max केते होबो yes sir k होल इनटू a प्लस b होल स्क्वायर I mean केते होबो k whole into a minus a minus b whole square ताले I एवरेज केते होबो I जदी मैक्स और मीन दिटा को समान नै सेट पे हम गोटे काम करी एटा एवरेज बाहर कर दबा ताले एवरेज जदी बाहर करबा ताले I max प्लस I mean बाय 2 देखो एवरेज बाहर करला केते आसु देखो k कॉमन जीवो a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर व्हाट इज द फार्मूला अलजेब्रा so 2a square plus b square 2 होल इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2 2 2 कटि गेला तो केते आंसर आसला k होल इनटू plus b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस I एवरेज तो एठी केते आस्तला इंटेंसिटी k होल इनटू a प्लस b होल स्क्वायर एठी इंटेंसिटी केते आसला k होल इनटू अरे a square plus b yes equal एठी दिला k होल इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एठी भी k होल इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिटा का सिमिलर ना नहीं yes sir so this is the answer understood interference so this is the answer so conservation of energy last line you will write so conservation of energy holds good in interference next any doubt in this No, sir. next question draw the variation of intensity with the phase difference in interference pattern हमें तो ऑलरेडी इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न ड्रॉ कर सारलेनी बट कथा मो क्लास रे तुमको ड्रॉ करला बेले एक्स एक्सिस रे मो कोन हेतिली ना सब पोजीशन गुडा को एक्स एक्सिस लेथिली 1 मिनिट so now this question okay phase difference हमें path difference मो तुम पोजीशन रे देखैतिली इंटेंसिटी ग्राफ टा बट तुम ताको फेज डिफरेंस रे लिखिबो फेज डिफरेंस लिखले मते खाली कहि देबो कोन हबो फेज डिफरेंस मैक्सिमम रे कंडीशन कोन थिला माने अछि तमन कर फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2n pi 2n pi हेले कोन हला हमर 2n pi माने 2 pi कने सेंट्रल मैक्सिमम तो 0 पळेला तापर 2 pi 4 pi 6 pi हेला एगुडा स्केरे सब हबो मैक्सिमा आ मिनिमा कंडीशन कोन दिला 2n minus 1 pi 2n minus 1 whole into pi तामाने pi 3 pi ला एगुडा सब मिनिमा तन तबे x एक्सिस रे लिखिबनी लैम्बडा d by d लैम्बडा 2 लैम्बडा d by d 3 लैम्बडा d by d एमिति लिखिबनी x एक्सिस रे तुम लिखियो मैक्सिमा जगह रे 2 pi 4 pi 6 pi ए भलिया हला तो मु देखि दोछि देखो केमति लिखियो बुझि परछ तुम कोन कहूची कने एटा मार्क कटि जाय पिला मान कर से वर्सेस कोन कहि छै एटा इंपोर्टेंट पिलन खाली गोटे प्रकार मन रखि थानी से गोटे प्रकार को सब लिखु थांदी खाली गोटे टाइप मन रखनी तुम वेराइटीज मन रख
हला जदी हम फेल मार्क हे जाउथबो एग्जाम रे गोटे टीचर टे मार दे देबो किंतु जदी त गुड मार्क रखुछ फुल टू फुल रखिया को जाउछ तले टीचर सब देखिबो एडा को को जगह काटी हबो मार्क मन रखिता बोर्ड रे जो कॉपी रे गोटे पिला हाईएस्ट मार्क रखि दबो फुल टू फुल मार्क रखि दबो ता कॉपी को 4 जण टीचर वेरीफाई करिवे और समस्त देखिबे जे कोठी मार्क काटी हबो हला खोजुथिबे खाली हाफ कोठी काटी दबा हला कोठी 1 काटी देकी ताको कर दबा कमे दबा मार्क हला एंड खोजुथिबे टीचर माने so this is I think not good okay so maxima eta maxima gala tapare minima ta kete pi re tapare maxima kete 2 pi tapare minima kete 3 pi tapare maxima kete 4 pi हला tapare एमती हबो ग्राफ जेम तमरे हेतला एपडे समति माइनस माइनस लिखि लिखि चलिबो ओके 2 pi जगह सो maxima हबो 4 pi जगह सो मिनिमा हबो दसो मिनिमा हबो एमती असला मिनिमा maxima चला तो समान समान इंटेंसिटी रेंज करिवो मु तळे काहे कि आनि टच करलिनी एक्स एक्सिस को केतल टच करिवे से सर एम्प्लीट्यूड एका हेले जदि एम्प्लीट्यूड सेम हबो ताले जाई से टच करिवो नहले से टच करिवो नाही ओके माने एम्प्लीट्यूड समान हे जो इंटेंसिटी 0 हे जो सही टच करिवो नहले टच करिवो बट इन जनरल केस में करते तुम तळे टच करे दिले इट्स नॉट ए मिस्टेक मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज write the essential conditions for sustained interference that already you know in theory not required to discuss write the essential conditions for coherent sources that also you know in theory coherent sources conditions okay question number 8 let's discuss question number 8 now question number 8 so what are the given in question number 8 tell what are the given in question number 8 so lambda देछि Lambda. 5100 angstrom what are the given lambda is So 1500 angstrom. 5100 angstrom not 1500 5100 angstrom and small d so small d पचाछि capital D what's capital D how much 200 centimeter 200 centimeter okay on a screen 200 centimeter away is 2 centimeter okay 10 fringes separation is how much 2 centimeter. 2 centimeter tell me lambda is how much 5100 angstrom small d is the question capital D how much so 200 centimeter 200 centimeter 10 fringes separation is how much 2 centimeter 2 centimeter. 10 fringes separation means 10 beta 10 beta is 2 centimeter so 10 lambda d by d is equal to 2 centimeter okay lambda given small d given small d asked capital D now you I think got everything capital D देछि lambda देछि तम खाली small d बाहर करिवार अछि calculation is yours को small d केते आसला so 51 into 10 to the power minus 3 centimeter आछे एटा 51 into 10 to the power minus 3 others tell me the answer The same. 0.51 millimeter. 0.051 centimeter is it So 0. Yes. 0.051 centimeter this is the answer given over Sir, yes sir 10 बीटा ର କିଛି ଜରୁରତ ହିଁ ନାହିଁ ତ normally बीटा 2 cm ହବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ତ same separation ରହିବ she କହିଛି overall separation of 10 fringes माने 10 टा fringe मिसी की separation होची 2 cm got my point समस्तंगर सेम सेपरेशन दैट्स राइट बट से 10 टा फ्रिंज रा सेपरेशन होची 2 cm से गोटे फ्रिंज रे देनी गोटे फ्रिंज देछि कि सेपरेशन no sir क्वेश्चन को भलो पड़ से 10 टा फ्रिंज रा सेपरेशन को देछि 2 cm तने 10 लैम्बडा 10 बीटा इज इक्वल टू 2 cm ओके
Question number 9, I think already you have done. Discuss a moving source slit closer to double slit plane. Already have done question number 9. Question number 10. When monochromatic light is replaced by white light, what happens to the interference pattern? Question number 10. Tell me the answer. So dark fringes are not same fringes. Then what Sir, will happen? So the diffracted image get disappear into constant colors of white light. Colored interference pattern will be observed. That is important one. Second is, what about the central fringe? Still white. White. Fringe will be bright white. Central fringe will be white. Why central fringe will be white? तमे खाली रेड कलर कथा चिंता करो. केवल रेड कलर पड़ला. यदि केवल रेड कलर पड़ला मते कुह रेड कलर तार ओनली रेड कलर ता ता निजर इंटरफेरेंस पैटर्न देला. ले मझिरे फ्रिंज ता को कलर हबो? Red. Red. रेड डार्क चलला. मने करे केवल ब्लू कलर तार इंटरफेरेंस पैटर्न देला. तो मझिरे फ्रिंज ता को कलर हबो? So blue. ब्लू कलर हैला. तो ब्लू डार्क हैला. जदि ग्रीन कलर नबा तले मझिरे फ्रिंज ता को कलर हबो? Green. ग्रीन डार्क हैला. तले मते को जदि सब कलर माने निज निजर पैटर्न देले तले सेंटर रे सब जगह कलर प्रेजेंट रहले ना नहीं गोटी जगह रे. Yes, sir. Yes. तले सेंट्रल फ्रिंज रे सब कलर मिसी गेले सेटा को कलर हेला? White. ताले सेंटर ता व्हाइट कलर. बाकी कलर इंटरफेरेंस पैटर्न आसीबो. डार्क फ्रिंजेस कथा आसीबो ही नहीं काहेकि ना जोठी रेड कलर ता डार्क देथांता सेठी वायलेट कलर तार ब्राइट दे देला. ओके और डार्क रो कथा उठिबो ही नहीं काहेकि ना अलगा कलर मानकर ब्राइट सेठी पड़ जिवो. दैट टोटल कलर्ड इंटरफेरेंस पैटर्न आसीबो. आ गोटे कथा ला सेंट्रल फ्रिंज को सराउंड करके को कलर रहिबो? As per your book, it's given red color, but के कहते blue color. It's in controversy, but I support की red color. Okay, किछ बहुत बही बन के सब blue color लिखा है, but मु red color इतना support करूची because red color रो width ता अधिक थिबो. अलगा कलर गुडा जेतेले सब से जगह रे पसिले सेमान सब से रेड कलर भितरे ही रहिबे. तांकर width जेतु कम से भितरे रहिबे, but ending रे को कलर ता बंची जिवो? सामान्य सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज रा दीपट साइड रे को कलर रहबो? Red color. रेड कलर. तापरे बहुत दूर को कलर आसीबो? ब्लू कलर. एक्सपेरिमेंटली सेटा ब्लू कलर आसीबो बहुत दूर को. हला तो लिखि दे समझ लिखियो चलता आंसर ता. When monochromatic source of light is replaced by white light, the central fringe is white. The central fringe is white and colored interference pattern is observed. The central fringe is white and colored interference pattern is observed. Co interference pattern देखा जीवा? Colored interference pattern is observed. Close to central fringe, red color appears. Close to central fringe, red color appears. And far from it, blue color appears. Close to central fringe, red color appears, and far from it, blue color appears. Okay. So what you wrote? Please read.
Central fringe is white and colored interference pattern is observed. Close to the central fringe, red color appears, and far away from it, blue color appears. Okay. So this is the, and after few fringes, no clear fringe pattern is observed. Go to the next question. White light replacement is a very, very important question. Monochromatic light is replaced by white light is a very, very important question. Remember. Question number 11. How would the angular separation of interference fringes change when the distance of separation between slit and screen is doubled? Just before I discuss. What is the answer? Do not change. Remain same. Because angular fringe is independent of a capital D. Question number 12. B1. Distance between the slits reduced. If distance between slits reduced, then what is the effect on interference fringes? What happens to fringe width? Distance between slits is reduced karijiba. Increase. Distance between slits is reduce kare small d reduce kariba tale fringe width kona ba? Increase. Increases. Increases. Fringe width increases. Okay. Monochromatic source is replaced by source of white light. Already we have discussed. Immersion of apparatus in water also we have discussed. Okay. Sir, Yes. sir, say monochromatic replaced by white light रे red और blue टा mention करिया necessary. କରିଦେଲେ ଭଲ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ ହେଲା central fringe is white and colored interference pattern is observed ठीक ଅଛି okay Yes, sir. also sufficient. Question number 13. Intensity I and 4I. What is the maximum and minimum possible intensity in the resulting beam? What is the maximum and minimum possible intensity asked here? I and 4I also individual intensity. I max or I min se pacharche. I have 4I individual intensity. Question is like this: I achi, 4I achi, means it has I1, it has I2. Question pacharche, my max or I min kete haba? What formula I will use here? Root I1 plus Tell me formula. Root I1 plus root I2 रो whole square. Plus root I2 square. I1 plus I2 plus 2 I1 I2 root over cos phi thila but maximum hele cos phi ta kete hijiba 1. cos phi 1 hijiba cos phi 1 he gele etik banchila to eta kona asi hochi eti direct पके देली भी हबो नल तो तमे root I1 plus root I2 रो होल स्क्वायर भी पकेले हबो हैला ठीक अछि आकु जदी कन्वर्ट कर दो root I1 plus root I2 रो होल स्क्वायर तो भी हबो नल डायरेक्ट पकेली हबो I1 जगह रे I I2 जगह रे 4I चलला 2 root under 4I the square. What answer is coming? I max 9. So 9. 9. Then I minimum. Minimum ta khali eta minus है जो plus है जो khali minus है जो changes khali share. I. Yes. किधर slide minimum ta? I. I. This is I. I minimum is I. So I maximum 9I. I minimum I. Okay. Next question. Question of 12. 2 slits. Okay. Question number 12. Question number 12. Next question. So 14. So 14. 14 is next question. So Sir, 14 question number discussion. 14 discussion हबो. Oh, 14 I left. Achha, sir. Question of 14. Yes. 2 slits. Then question of 14. Please tell the givens. Small d Small equals d to is 0.125 mm. Small d. Yes. Small d is given, lambda is given. We have to And find capital Lambda D how is much? 3. lambda Lambda. 4500 Armstrong.
Then The small d is 0.125 mm. 0.125 millimeter. Then Capital D equals to 1 meter. Capital D 1 meter. Capital D capital D 1. given 1 meter. Okay. Capital D given 1 meter. Find the separation of the second bright fringe on both sides of a central maxima. Second bright fringe on both sides of central maxima. This central maxima is epote second bright fringe. 2 lambda D by एपटे D. सेकंड ब्राइट फ्रिंज रो सेपरेशन हम बाहर करबा ओके बोथ साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा राइट सेकंड ब्राइट तो एपटू को सेकंड ब्राइट केते बार स्प्रेड करछ एपटू केते बार स्प्रेड करछ को सेकंड ब्राइट रो 4 हमर beta फॉर्मूला 2 lambda d equal by lambda D by D. by d. 2 लैम्बडा डी बाय डी हमर एल लैम्बडा डी बाय डी थिला मु एन जगह 2 पकेबी जेतु सेकंड तो लैम्बडा डी बाय डी लैम्बडा दिया हेछि कैपिटल डी दिया हेछि स्मॉल डी दिया हेछि सीधा वैल्यू बाहर करिवो और लास्ट को सेपरेशन केते आसीबो ना ऊपर को y तळ को y सो आंसर विल बी 2y जहा आसिला गॉट इट yes sir. So what answer you got? 144 into 10 to the minus 4 meter. Answer is coming 44.4 millimeter. Is it correct? Yes, sir. Yes. Yes. But 14.4. 14.14.4. 14.4 millimeter. Question number then 15. It's a good question. Draw a graph showing variation of intensity versus position on the screen in Young's experiment when both slits opened, one slit closed. Bit both slits open and second bit only one slit open, one slit closed. What is the answer? Bit A. Who can tell me? Have you done this one earlier? Yes sir. Both slits open means which graph? Sir, interference. Interference ro graph. One slit open means? Diffraction. Diffraction ro graph. Yes, very good. Okay. Both slits open means interference graph or one slit open means diffraction graph. But किछि किछि book माने मु देखिछि one slit open रो graph टाको एमिति करछन्ती. So it's wrong. सेमति केबे भी करिवोनी कि कंफ्यूज होबनी तुम माने because एमिति कहीं कर दैछन्ती because से one slit open हेले diffraction हबो सेही कथरे को से इंपोर्टेंस देना. से कहछन one slit open हला तो इंटरफेरेंस हेलानी. इंटरफेरेंस न हेले स्ट्रेट लाइन बेली कर दैछन्ती आ हला. बट तमे किंतु सेमति भूल करिवो नाही. But my point, both slits open and one slit closed. Okay, very, very important. Both slits open interference graph, one slit open diffraction graph. But mu jota dekhi button whiteboard re emti graph kebe bhi karibo nai. Next question. 16. Question number 16. Both intensities given I1 and I2. What will the intensity at points where the phase difference is pi by 2 and pi? Right? Direct formula, nothing else. No. What is the intensity formula? In terms So of I1 and I2. So I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. Yes. And phi is given here. B2 and phi ta pi by 2, B2 and phi ta pi. Sidha put kariba and answer paibo. Okay. I1 plus I2 plus 2 root under I1 I2 cos phi. Phi ର value put kariba answer paibo. Answer କେତେ କେ ଆସୁ put କଲା ପରେ? Sir, So 5 by first the 5 phi tapare I. Okay. Very nice. 5 wave then I. Question number 17. All of us see question number 17. Young's experiment with the given so we are discussing which question? Question number 17. 70. Tell me the givens.
Sir, small d 0.90 millimeter. Small d 0.90 millimeter. Sir, capital D 1 meter. Capital D 1 meter. N is equal to 2. Acha, second dark fringe. Okay, second dark fringe n is equal to 2. Okay, right. Then Sir, y is equal to 1 millimeter. what is 1 millimeter? Y. Y is equal to 1 millimeter. Y is equal to 1 millimeter. Okay. Then the question is asked here to find Sir, wavelength. to find lambda. Question asked here to find lambda. Okay. Tell me the formula. 2 by d, capital D by small d is equal to y. 2n minus So 1. y equals to 2n minus 1 lambda d by 2d. n जगह में 2 पुट कर दबा. n जगह 2 पुट कर देले केते पळे आछि? So 3 3 by 2 lambda d by small d. 3 lambda d by 2d. n जगह में 2 पुट कर दबा. ओके. सब गिवन अछि तमनको y देछि, कैपिटल D देछि, स्मॉल d देछि, तमको लैम्बडा बाहर करिवार अछि. Got it? yes sir. Yes, sir. कितना असला लैम्बडा? 6 into 10 to the power minus 5 meter. 6000 angstrom. angstrom. Okay. Yes, sir. Question number 18 and 19 are the derivations. Empty derivation exam assay proves Snell's law on the basis of wave theory and explain Young's double slit experiment, derive the expression of fringe width. Okay. But ये जो derivation गुड़ा दिया है इसे गुड़ा exactly केमती आसे but आजकल टिके complicated करके derivation पकोचे language गुड़ा but writing समान but बुले वाले question पकोचे केमती पकोचे तो हम सबको previous year पाई परिवो केमती question आप पढ़ी चेक exam में 20, 21, 22 are the three important horse of this chapter. बहुत important 20, 20 and 22, right? So let's discuss now 20, 21, 22. Question number 20. एटो आरंभ वाला बर्तन हॉर्स ये तीनटा आपको लगे कि अच्छी आउ तीनटा 3 टा क्वेश्चन ए चैप्टर रे एते इंपोर्टेंट से 6 भितरु माने गोटे क्वेश्चन माने 100% एग्जाम रे आसला वाले क्वेश्चन एते इंपोर्टेंट से तीनटा कोटा कोटा एबे जो तीनटा बाकी अछि यस सर एबे जो तीनटा क्वेश्चन बाकी अछि सेही तीनटा ता संगरे होचे हमरो माने आउ तीनटा क्वेश्चन भी अछि डिस्कशन करेगी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम रे सब बळे आसे क्वेश्चन नंबर 20 होप ऑल ऑफ यू रेड क्वेश्चन नंबर 20 coherent or incoherent n identical source each of intensity I naught coherent ele net intensity कितना होगा incoherent ele net intensity कितना होगा let's discuss okay tell me the answer बहुत simple I naught individual amplitude हो जाए I naught n identical क्योंकि incoherent ele कौन होगा coherent ele कौन होगा individual I naught okay होला फास्ट incoherent कर दो एटा बहुत सहज को incoherent रे कौन होगा net intensity So normally add hobo. Normally add होगा I naught plus I naught dot n times net intensity कितना असला So ni not. N I not. coherent हेले कौन होगा Sir root I not plus root I not वाला root I1 plus root I2 वाला formula पकेगा. coherent हेले root I1 plus root I2 एमती हमरे इवले फॉर्मूला थिला रो स्क्वायर Yes. Yes. ओके root I1 plus root I2 रो स्क्वायर राइट हमरे एमती थिला बट आमे एटा को वर्तमान में कोन करबा एटा वर्तमान सबुडा सेम हे गला root I naught
एमती n टाइम्स हे गला रो स्क्वायर हेले n into root I naught रो स्क्वायर it's coming how much The n square I naught. n square I naught कोहेरेंट हेले मैक्सिमम इंटेंसिटी ना सर इनकोहेरेंट रे से कॉमन मैन जेमते देखुतला सेही वाला जिंसटा होचे yes yes incoherent रे कॉमन मैन काहे ना incoherent ना नॉर्मल हबो इंटरफेरेंस रो चांस ही नहीं so this is coherent case right next question the intensity it's a very important question number 21 is a very important question many times this question comes in board examination many times बोर्ड एग्जाम रे जहा आसी छै आज पर्यंत मु आता को आउ गोटे स्टेप आगु को डिफिकल्ट करी की क्वेश्चन तुमको देछि दिस इज आल्सो एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन anybody has done this question very nice okay because the central maximum intensity I naught तमे 1/3 of the fringe with distance रे कैलकुलेट करो इंटेंसिटी और सेटा I naught by 4 आसे बोली प्रूव करो क्वेश्चन समस्त पढ़ी की बुझी जाइछ जो न बुझ परछ क्वेश्चन को बार-बार पढ़ी के बुझ क्वेश्चन बुझिले ही आंसर हबो नले हबनी थरे न बुझ पले ताको 5 थर पढ़ो जेते थर पढ़िबो सेते थर ही तमे नुवा जिंस अंडरस्टैंडिंग तो मुंड भीतर आसीबो जे पर्यंत क्वेश्चन विषय किछि आईडिया आसुनी रिपीटेडली जस्ट रीड द क्वेश्चन just repeatedly read the question always I repeat one concept one advocate reads the suicide note how many times how many times 100 times 100 times you are thinking why the advocate is reading the suicide note 100 times suicide it must be written in a simple language then पढ़ी देला बस this the cause that happened this happened बस सरला तो सुनि देला but 100 times काहे गोटे advocate suicide note को पढ़े because जिते पढ़िबो सेते each word रे क्लू बाहरिबो सेते इंफॉर्मेशन मिलिबो सेते जो क्वेश्चन ता तुम किछि मुंड भीतर आईडिया आसुनी you just read the question continue reading it 4 times 5 times 6 times 7 times जे पर्यंत विषय की आईडिया न आस तुम पढ़ी चलो देखो आईडिया आस जो ऑटोमेटिकली ओके तो क्वेश्चन एमती अछि दिस द स्क्रीन दिस द सेंटर रु सम डिस्टेंस से x नै बट हम पर्यंत y नै चलतले बट से x नै अछि कहे x ता होछि 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ इट्स द इंटेंसिटी I naught हला एटी इंटेंसिटी I naught by 4 हबो बोली तमे प्रूव करो बोली से क्वेश्चन ता देछि किंतु क्वेश्चन गोटे डिमेरिट हेछि से को जगह रे मेंशन करिनी जे दीटा का सोर्स कोहेरेंट सोर्स नै छै से माने आइडेंटिकल बोली कोठ मेंशन करेनी बट से आइडेंटिकल नै कि नॉनली क्वेश्चन रे सॉल्व हबनी एटा होची क्वेश्चन डिमेरिट ओके तो हमको आइडेंटिकल करी नबा को पड़िबो माने दीटा के इंटेंसिटी सेम नबा को पड़िबो मींस I1 = I2 नबा को पड़िबो दीटा के विड्थ समान एम्पलीट्यूड समान इंटेंसिटी समान हला I1 = I2 अब ऑलरेडी से फार्मूला टा भी तमरा मु डिराइव करि सरथिली पर स्टिल आउ थरे डिराइव कर दोछि मु I1 = I2 जदी हबो नेट इंटेंसिटी केते हबो नेट इंटेंसिटी फार्मूला ए तो मन करथिला I1 + I2 2 I1 I2 root over into cos phi but the I1 = I2 is that is I हबो बा I not नल मु नै जाउछि मु I not नै जाउछि एटा I net हे जाइछि तमरा नेट इंटेंसिटी मु I1 जगह I not I2 जगह I not नै जाउछि I not 2 I not to square root over I not into cos phi okay so 2 I not take common এটা 2 I not थिला एथरु 1 पळेला एथरु cos phi पळेला 1 plus cos phi होची 2 cos square phi by 2 એટલે 4 I not cos square phi by 2 this is your formula but तमे एई फॉर्मूला को मन रखिबनी rather तमे कोन करबो ना 4 I not means एटा इंटेंसिटी मैक्सिमा तने तमे I max लिखि मन रखिबो because ये I max ता डिफरेंट क्वेश्चन है डिफरेंट दिए सेतन तमे कंफ्यूज न हो सेतन मुको तमे एटा को मन रखिबो this is the key formula to solve this type of a question
I is equal to I max cos square 5/2 हला एबे हम कोन करियो देखो मो फाई जानि दिला बेटा आईटा बाहर कर दियते सी कहै छी इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट बट फाई जानिबा कहले हमको पाथ डिफरेंस जानिया पड़िबो क्वेश्चन टाको सबले तुम पछरु भाबिबो पछरु बैक साइड क्वेश्चन टाको भाबिबो देखो मु पछरु भाबुची क्वेश्चन एटा फार्मूलाटा ना एटा मु एटा को यूज करबी बट एथरे मते आई मैक्स देइची से कहै छी आई मैक्स टा होची आई नॉट बोली ए क्वेश्चन से देइची आई मैक्स टा को आई नॉट ओके बट फाई देनी फाई कि बाहरिबो फाई बाहर करे बोले मते पाथ डिफरेंस बाहर करले बाहर पड़िबो मते पाथ डिफरेंस तो हमको देइनी किंतु जा देइची हमें सेइथरु पाथ डिफरेंस तो रिलेट करिया को चेष्टा करबा जा देइनी और जा देइची तांको तो रिलेशन चेष्टा करबा आनिया पाए देखो बहुत इजीली रिलेशन पळे आसबो पाथ डिफरेंस र फार्मूला तुम टिके मन पकाओ पाथ डिफरेंस फार्मूला टा कोन थिला मते को तमर थिला y d by d बट मोटे तो y ने क्वेश्चन डिमांड करछु y जगह x सेटा मु लिखुची x d by d पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू स्मॉल x d by d ओके तो हमको स्मॉल x टा गिवन अछि हमें सीथरु बतन पाथ डिफरेंस बाहर कर दबा तबरे पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस रे कन्वर्ट कर दबा देन फार्मूला पके दे एति कुछ पाठ ओके देखो बे कोन हला पाथ डिफरेंस एट डायरेक्टली देनी बट इनडायरेक्टली देछि x देछि ना तो पाथ डिफरेंस बेले बेले पाथ डिफरेंस डायरेक्टली दे दबो हेले आउट इजी हे गेला ओके बट एटा मोटी के कॉम्प्लिकेटेड रखछि क्वेश्चन दा ड्राइंगली बट एनसेट बुक रे पाथ डिफरेंस डायरेक्ट दे देछि मु एबे जो क्वेश्चन त मु देछि पाथ डिफरेंस डायरेक्ट देनी हां तल देखो एटी कोन हबो से कोन कहितला x टा को से कोन बोली कहिछि 1/3 of a fringe width will कहिछि x is equal to 1/3 of a fringe width right so x place से देखो मु बतन एटी कोन पुट करूछि so x ताले वर्तमान एटी केते आसला को एटी x टा को चेंज कर दियो डेल्टा x d by d from this got it so x equal to delta x d by d any doubt if already usual if already मन पड़छ कोटे आस्तेला यंग्स डब्ल्यूसी एक्सपेरिमेंट जो पाथ तुम केस 1 केस 2 बाहर करे पूर्वरु पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करनथले एति केस नथला yes ओके yes तापरे इज इक्वल टू 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ बीटा टा केते लैम्बडा d by d d d d d तो डेल्टा x हला लैम्बडा बाय 3 ताले फाई केतेला 2 by 3 2 pi by 3 लैम्बडा जगह 2 pi पके दियो तापरे ई फार्मूला को पळे आसो आई मैक्स को तुम जहां नहीं थो से नहीं जीवा क्वेश्चन जहां डिमांड करूची क्वेश्चन को आई नॉट नियो तो आई नॉट cos स्क्वायर फाई जगह में केते पकेबा 2 pi by 3 by 2 2 2 कटि गला आई नॉट cos स्क्वायर 5 by 3 cos स्क्वायर 5 by 3 हाफ रो स्क्वायर 1 by 4 so I not by 4 this is the answer एति यूज मात्र आंसर किंतु आपको बुझिबा दरकार एनी डाउट देखिए द क्वेश्चन एनी डाउट सर यस सर आपण cos स्क्वायर पाई बाय 3 रो वैल्यू पुट कले 5 by 3 वैल्यू पुट कली ओके सर cos 5 by 3 होचे हाफ तार स्क्वायर हला 1 by 4 गॉट इट यस सर मोटा खाली फार्मूला बाहर करे पे टिक करथिले एटा किछ काम नै बस डायरेक्ट फार्मूला यूज होला एकदम मन रखियो आगु रोले जानि थिलो बट बाहर करले हला बस एति कुछ पाठना किंतु मैक्सिमम आज पर्यंत जब बोर्ड एग्जाम रे पछे डायरेक्ट ए पाथ डिफरेंस को दे दिथिबो लैम्बडा बाय 3 बोली यदि एटा को डायरेक्ट दे दिछि तले ए स्टेप टा दरकार पड़लेनी जदि के एनसीटी बुक देछि तो हेगला से क्वेश्चन दा से सेम क्वेश्चन प्रीवियस रे बहुत थर पड़ी छी तो देख परियो मजरे मजरे से सेम क्वेश्चन रिपीट है बहुत थर यू कैन सी द क्वेश्चन देखा 8 गुड थर पड़ी छी 16 नंबर क्वेश्चन
Delhi 2012 रे पड़थला this one can you able to mark एटी IMAX टा से केते देछि IMAX unit. IMAX के देछि ओके आउ पाथ रेफरेंस केते देछि lambda lambda लैम्बडा बाय 3 और से दी रे कंडीशन बोल देछि कि yes मन को लेट बोले लैम्बडा इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन व्हेन पाथ डिफरेंस लैम्बडा इज k यूनिट अच्छा ओटा कंडीशन वाला से दे देछि से को जेले पाथ रेफरेंस लैम्बडा सेते बेले k यूनिट ले पाथ रेफरेंस लैम्बडा बाय 3 हेले केते हबो हला ठीक अछि तमने तुमको ए सेम फॉर्मूला पडिबो जो फॉर्मूला टिके पूर्व मु लिखि दिली सेही सेम फॉर्मूला पडिबो हला तुम खाली दीटा कंडीशन वाला फॉर्मूला पके के करिवो सेम क्वेश्चन सेही सेम क्वेश्चन भी तुम पाइबो पडिछि एग्जाम रे बहुत थरा सेही क्वेश्चन उडा देखो एई गोट जगह पडिछि सेही सेम सेही के देख परछ दिल्ली 2014 रे पडिछि हला अगु 3 मार्क्स रे पडिछि एट देखो पडिछि 2012 रे 2 लैम्बडा बाय 3 अछि एटा कंडीशन वाला पके दिछि ओ पाथ डिफरेंस लैम्बडा हेले आई होछि के हेले 2 लैम्बडा बाय 3 हेले केते हबो करिवो से आंसर ठीक है लेट्स कम टू द इंटरफेरेंस 22 क्वेश्चन एटा खाली मैथमेटिकल क्वेश्चन टा देखो क्वेश्चन देखो समझते गोटे इंटेंसिटी केते अछि आई आ गोटे इंटेंसिटी केते अछि I plus delta I आई प्लस डेल्टा आई से क्वेश्चन कहछि आई मैक्स टा प्रूव करो 4i बोली आई मीन टा प्रूव करो डेल्टा आई स्क्वायर बाय 4i बोली ओके तो i1 टा i2 टा होछि i प्लस डेल्टा आई तुमको आई मैक्स बाहर करियो पड़िबो आउ आई मीन आगे आई मैक्स बाहर करो फॉर्मूला मन अछि समस्त करो √y1 plus √y2 रो होल स्क्वायर i plus डेल्टा आई eta root over रो होल स्क्वायर मैथमेटिक्स खाली मैथमेटिकल ट्रिक है किसी ने √y गोटे मल्टीप्लाई कर दियो आ गोटे √y टे डिवाइड कर दियो रो होल स्क्वायर पर टोटल होल स्क्वायर देखो √y मल्टीप्लाई करली एठी √y डिवाइड करली बट √y रो स्क्वायर बाहर को नै जाउछटा आई हे गेला आ ब्रैकेट भीतर कोन रहला ना 1 एटा कोन गेला √y दिस वन 1 प्लस डेल्टा आई बाय आई एतिकिरा हाफ पावर कर दो एठी रूट ओवर थिला होल स्क्वायर को डाउट रहा जदि मत पचारा आई बट डेल्टा आई इज वेरी लेस देन आई अच्छा हाफ पावर तो मैं ओपन कर दबा आगे 1 प्लस हाफ इनटू डेल्टा आई बाय आई स्क्वायर ओके बाइनोमियल थ्योरम यूज कर डेल्टा आई बाय आई इज आल्सो वेरी स्मॉल तो हमें ताको नेग्लेक्ट कर दबा राइट सो दिस वन इज नेग्लेक्टेड एटी भी नेग्लेक्ट कर देथिले भी हिसाब थांदा किबा एटी नेग्लेक्ट कले भी चलिबो जोर नेग्लेक्ट कले चलिबो हला टेंड्स टू 0
তাহলে কত আসলা 1 + 1 2 2 র স্কয়ার 4 4i I max is equal to 4i over see mathematics को doubt लगे तो मत पचारो then we'll go to I mean it's complete Yes, sir. I mean देखो बहुत सहज मोटी संख्या देखिए दोस्तों हमको I mean कौन हबा I mean ही जो मु सेठी चेंजेस उडा कर दोछि this is minus 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 but I mean रे को तुम नेग्लेक्ट करबनी ओके बिकॉज़ आको नेग्लेक्ट कले तुम प्रूफ रे पहुंच परिबनी तुम प्रूफ हबनी आको नेग्लेक्ट करबनी एडाटा कटि जिवो कटि गला पर I एटा जिवो डेल्टा I mod square by 4i square गोटा I कटि गले डेल्टा I mod square by 4i that I mean got it I mean and I max okay I mean it देख दियो समझते कौन कौन चेंजेस कर ले for interference all questions are over Yes, sir. but still previous year questions are left and you have to do the previous year questions diffraction रे सब formula based question already तुमने करी सारी छ what is Fresnel distance done in theory Yes, Yes. sir. why sound waves be diffracted more easily done Yes, Yes, sir. sir. question number 3 what two main changes when monochromatic source is replaced by white light same answer central fringe is white and the color interference part color diffraction pattern is observed central fringe is white and colored diffraction pattern is observed see the short answer first question it's a good question short answer first question when wavelength lambda 6000 angstrom what is the angular width it is reduced to 30% reduced by 30% by another wavelength lambda dash question is find the lambda dash very easy you can able to calculate not difficult one 6000 angstrom what value is there in a lambda dash it becomes reduced to 30, reduced by 30%. Okay, what is the value of angular fringe width of central maxima? Who can tell me the formula? What is the value of theta in 6000 angstrom means lambda? What is the value of theta? Okay, that is the expression of theta angular fringe width. What is the formula? 2 lambda by d. 2 lambda by d angular fringe width. Okay. Okay, it's okay. Then it decreases by sub 30% means how much remain? 70%. Decreases by 30% means remain 70%. 70% of theta it become when lambda becomes lambda dash. 70% of theta means 70 by 100 into theta. Theta means 2 lambda by d. 2 lambda dash by d. This is a direct question. No problem. Okay. dd cancel.
2 2 cancel. This is 7 by 10. So lambda dash is equal to 7 by 10 into lambda. And lambda it is 6000. Put in the value and to get the answer. 4200. Okay. 4200 is the answer. Understood? Then question number 2 direct formula based. Question number 3 I had told you कि मते कहबो question number 3 को concept of best के कह दबो. Sir, Fresnel distance. Yes, question number 3 होचे Fresnel distance. से direct दबनी Fresnel distance बोली. Without significant broadening means से Fresnel distance कथा ही कहछि. होला? Without significant broadening means Fresnel distance. Understood? So it's a easy question. कौन फॉर्मूला थला? Small d square by So small d square by lambda. lambda. Small d square by lambda. Fresnel distance. Very important. Always comes in exam. This question. So thank you.